Good morning. And if you have any questions about meditation practice, लुंगपुर कह रहे हैं कि यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. Much respects. I want to ask that it is often said that to see as it is. What to see as it is something I want. I wish that Lumpo may elaborate over it. to see To see as it is. as it is. आपने प्रश्न पूछा कि हमसे कहा जाता है कि जो जैसा है वैसा देखना है, तो पूछ रहे हैं कि क्या देखना है. Well, right now, for example, it's like this here. Not saying, we're not describing it like it is good, bad, or right or wrong, but it is like this. So this is like intuitive awareness. It's a ability to observe, and it's about, rather than describe, it's about the way it is now. So the conditions change, so then we, our feelings, our emotions change accordingly to the conditions. But the knower, we're putting ourselves in that position of knowing, of Bhutto, and so it's like the way it is like this. It's learning to pay attention, to be with the present moment. आपका उत्तर है कि इस समय जो जैसा है, जैसे हम बैठे हैं, जो भी अनुभव हो रहा है, उसका मतलब है कि जो जैसा है उसको देखना है. इसको किसी भाषा में समझाना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे अनुभव हो रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वेदना है, वो महसूस हो रही है, या जो भी मन की स्थिति है वो हमें महसूस हो रही है, तो हमें डायरेक्टली अनुभव हो रही है. उसको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम खुद अनुभव कर रहे हैं. So right now, each one of you can observe what you're feeling, what the kind of mood, mental state. So you're not looking outward. You're not trying to say whether you like or don't like, or agree or disagree, but just the state of your emotional state, your mood of the present moment is like this. इस समय आप सब लोग बैठे हैं, तो आप बाहर मुखी न होकर अंतर्मुखी होकर देख सकते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या हमारा मूड है, कैसा इमोशन है, कैसी भावना जाग रही है, तो हम स्वतः ही अनुभव कर सकते हैं. So like this is like conscious awareness. It's not defining or describing. We're not thinking about it, but observing, getting accustomed, being used to being the Bhutto, the knower. It's like this, rather than become somebody that knows something. You're starting to learn to develop a sense of trust in just attentive awareness of the present. हम
सजगता की ओर ध्यान दें कि हम सजग रह सकते हैं, कॉन्शियसली अवेयर हो सकते हैं कि हम जान के ध्यान की ओर करके महसूस कर सकते हैं कि क्या इस समय हो रहा है, और प्रतिक्षण हम एक दृष्टा भाव में स्थापित हो सकते हैं, भोक्ता भाव से हटके दृष्टा भाव में स्थापित हो सकते हैं। तो उसी को वो कहते हैं कि हम सजगता में विश्वास करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट इन अवेयरनेस, कि जो हमारी क्षमता है सती की, सजगता की, उस पर हम विश्वास करें, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें कि हम उसको दृष्टा भाव से देख रहे हैं, भोग नहीं रहे। It's important in the modern world, the perception of consciousness as within the body. We see, like in the West, we see consciousness is contained within the physical body. And this is, this is not the way it really is. At this moment, consciousness, the body is in consciousness. So consciousness is an awareness, mindfulness, sati sampajanya. Consciousness is this puto, this ability to be awake and aware in the present moment, which before you start thinking, before you start analyzing or describing or approving or disapproving, the state of a pure attention, pure awareness. आधुनिक समय में, खासतौर पर पश्चिम में, ऐसा माना जाता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई शरीर की ये प्रकृति नहीं है। हम सब में ये क्षमता है कि हम सजग रह सकें, जान सकें कि क्या हो रहा है। सती संपजन्य की क्षमता हम सब में है, और हम जानने के ऊपर ध्यान दें कि हम जानें क्या हो रहा है, ना कि उसके अंदर उलझ जाएं। इस क्षण पे क्या हो रहा है, हम उसको सजगता पूर्वक अभ्यास करने से जान सकते हैं। So you can describe it more like listening, where your senses are open. You're not trying to listen for anything in particular, like music or noise of any sort. It's just this sense of open attention, open attentiveness. जैसे कि हम सब बैठे हैं और सुन रहे हैं, हम किसी खास साउंड की तरफ ध्यान दे के सुन नहीं रहे हैं। हमारे ओपन अवेयरनेस है कि हम बैठे हैं और जो भी शब्द आता है उसकी हमें सजगता रहती है। The tendency is to want to describe, to think, to describe, to analyze. That's how we're conditioned. That's the conditioning. Modern education, attitudes in every place, every country are about, judging, making this right, wrong, good, bad. Because that's how the thinking process discriminates between phenomena. So this is big, small, good, bad. But intuitive awareness isn't discriminating, it's embracing everything as it is. हमारी सामान्य आदत ऐसी हो गई है कि जो भी हम जानते हैं उसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, उसको अच्छे बुरे के रूप में देखते हैं और जज करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं।
तो ये जो क्षमता है हमारी, वो एक उसका अपना महत्व है। लेकिन जो साधना में हम लुंग पोर में बताते हैं कि हमको सजगता की ओर ध्यान देना है, उसको उसके विवेचन में, उसको एनालाइज करने में ना ध्यान दें। So I try to encourage people to change their perception of consciousnesses within the physical body. Then it has limited to the form of our form as a human being, to as the body within consciousness, because that's the way it is. Consciousness is not personal. It's not, in this sense, the consciousness, Dhamma, ultimate truth, is not, doesn't belong to any person or any religion or anything. It is ultimate and universal, and we open to that through this awareness. मैं इसलिए सबको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना परसेप्शन, अपनी जो संज्ञा है उसको बदलें, कि जो हमारी क्षमता है, कॉन्शियसनेस है, वो शरीर तक लिमिटेड नहीं है, वो कोई एक लिमिटेड चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है। हम समझते हैं कि शरीर में कॉन्शियसनेस है, जबकि समझ ठीक से समझें तो कॉन्शियसनेस के अंदर हमारा शरीर है, हम शरीर के बारे में जानकारी है हमें। तो इसी को जो कॉन्शियसनेस कहें, धम्मा कहें, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, परमार्थ सत्य हैं। ये किसी एक खास संप्रदाय के या किसी एक खास रिलीजन के नहीं है, सबके लिए जो परमार्थ सत्य है वो सबके लिए एक ही है, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके लिए एक ही है। Due respects, what is the physical location of the mind? The physical location of the human mind? What is the physical location of the mind? The what? Physical location. Physical location of the mind. Well, the word mind, we use that more for mental formations. So that, you know, that the thinking process, there's perception, there's sensation, and in these physical forms, the human body is a very sensitive form, and it's here and now, but it's impermanent. So thinking, feeling, what we see, what we hear, smell, taste, touch, all conditions, all these are conditions, they're mental formations, they arise and cease. उनका प्रश्न था कि हमारा मन जो है, चित्त है, उसको शरीर में कहाँ पे स्थापित है। आपने कहा कि ये सब जो हैं एक मन के आयाम हैं, जो सोचना, हमारी परसेप्शन, हमारा संज्ञा या कुछ अनुभव करना, सेंसेशंस, ये ह्यूमन बॉडी, हमारा जो शरीर है, एक सेंसिटिव फॉर्म है और प्रतिक्षण 6 इंद्रियों से कुछ ना कुछ अनुभव करता रहता है। लेकिन ये सब अनित्य हैं, बदलते रहते हैं। जो कुछ भी हम वेदना समझ होती है, या सूंघने से होती है, या देखने से होती है, वो सब एक तरह से मेंटल फॉर्मेशंस हैं, शरीर मन की एक प्रक्रिया है, जिसे चेतसिक हैं, जो कि चित्त के आयाम हैं। So, like mindfulness, which awareness, these are English translations of sati, the Pali word sati sampajanya. That's our ability to be aware of the way it is.
the body's like this, the mental state, the emotional state of the present is like this. And in individuals, it's going to be different. Like what you're feeling right now, what I'm feeling, or anyone else is not going to be exactly the same, because these are mind states. They arise and cease. They're not. They tend to. They're sankharas. They're conditions, and therefore their nature is to change, to arise and cease. And this awareness is not a condition. It's not a sankhara. Awareness is the ability to be here and now, to see, to know sankharas as sankharas, to investigate sankharas rather than to attach to them or suppress them. जो ये शब्द माइंडफुलनेस और अवेयरनेस इस्तेमाल करते हैं वो पाली शब्द सती संपजन्य का ही अंग्रेजी अनुवाद है। ये एक क्षमता है जो हम सब में है कि हम जो भी अनुभव कर सकते हैं, डायरेक्ट अनुभव करते हैं, वो महसूस करते हैं, वेदना होती है। और इस समय भी जैसे हम बैठे हैं तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग फीलिंग्स हो रही होंगी, अलग अलग वेदना हो रही होंगी। तो ये हमें क्षमता है कि हम उसको जान सकें। ये जो क्षमता है जानने की क्षमता, ये सब में है। और बाकी चीज़ें जो हैं, फीलिंग्स, मेंटल फैक्टर्स, वो सब के सब संखार हैं, कंडीशन फैक्टर्स हैं, जिनका उदय व्यय होता रहता है। और ये जो क्षमता है, ये क्षमता ही हमको उस उदय व्यय को जानने की क्षमता देती है। वो जो हम उदय व्यय जानते हैं मन की फैक्टर्स का, वेदना का या संखारों का, तो वो ये उदय व्यय को जानने की क्षमता भी इस अवेयरनेस से ही है, सती संपजन्य से ही ये क्षमता आती है। So in the Thai forest tradition, like Luang Por Sumedho would teach the Bhutto mantra. This is the Buddha's name, and but it's in a mantric form. The Bhutto, the knowing in the present, that which knows the present moment is like this, and so it's not discriminating. It's not any personal. It's not a person. It's not a man or a woman. It's not a, it has no quality or characteristic other than knowing. And so this is what sati sampajanya panya, wisdom, is, what it really means in terms of the reality of it, rather than the conceptual versions. When we try to define, try to describe sati sampajanya, it is quite difficult, because it's just this pure attentiveness, ability to pay attention, to be here and now. And that's Bhutto, the knowing, and Bhutto knows sankharas as sankharas. This awareness then is not a sankhara. The one sankhara can't know another sankhara. Only conscious attention knows sankharas, sape sankharanich, all conditions are impermanent. थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में अजान चाह हमको बुद्धों का मंत्र देते थे ध्यान करने के लिए, इस सुविधा के लिए। बुद्धों का तात्पर्य है जानना। वो जो जानने की क्षमता है, ये पर्सनल एबिलिटी नहीं है हमारी, ना ये कोई पुरुष है या स्त्री है, केवल जो भी हो रहा है उसको जानने की क्षमता है। उसी के से सती संपजन्य पन्या शब्द इस्तेमाल किए गए। ये इस समय का सत्य है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा कंसेप्चुअल रियलिटी नहीं है। इस समय का जो सत्य है, जो भासमान, जो सत्य अनुभव हो रहा है, उसी को इन शब्दों से समझाया गया। ये वो क्षमता है जो हम में सब में है कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो क्या अनुभव हो रहा है, उसी को अजान चाह बुद्धों के नाम से कहते थे। वो एक संस्कार नहीं है,
क्योंकि संखार जो हैं सभी संखारा अनिच्छा, सब बदलते रहते हैं और एक संखार दूसरे संखार को नहीं जान सकता। तो इसीलिए इसको अवेयरनेस को अलग से क्षमता के रूप में देखा जाता है। So the thinking is, thinking is for discrimination. So the thinking process is about heaven, hell, good and bad, right and wrong. It's the discriminatory tool that we have as human beings. But when we depend on thinking, when we try to think about Dhamma or think about Buddha, we still see it tends to always create this sense of an object, some Buddha as some force or some power or a historical figure. And so the thinking process can't take us to ultimate reality. And so, but beyond, when Sati Sampajanya is not thinking, it's pure attention, pure awareness. So this is the way the Buddha taught, pointing to Sati Sampajanya as the way for liberation. It's the liberating potential that each one of us has. जो हमारी विचार करने की क्षमता है, थिंकिंग है, वो भेद करने के लिए, अलग अलग समझने के लिए है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। जिस तरह से हम स्वर्ग और नर्क, हेवन हेल, ठीक और अच्छा और बुरा उसका विचार करते हैं, वो उस काम के लिए है। लेकिन इस विचार करने की क्षमता जो है वो हमको परमार्थ सत्य तक नहीं ले जा सकती। और विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है बुद्धो जो है कोई एक शब्द, एक ऑब्जेक्ट है या एक हिस्टोरिकल बुद्धा है। लेकिन जो हम ध्यान जो हमको देना है वो सती संपजन्य जो है वो एक क्षमता है, वो भी जानने की क्षमता है, जो अवेकनिंग की क्षमता है, वो सब में है। और यही एक क्षमता है जो हमको परमार्थ सत्य की ओर और मुक्ति की ओर ले जा सकती है। केवल सोच विचार से मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकते। Much respects, sir. I wanted to. My question comes from your what you said just now about thinking, and I want to know how do we stop overthinking, and also in certain fields, in some professions. Where like in the field of arts, where one has to feel and one has to express. So how does one keep sati, and how does one go about a profession where a lot of feelings, lot of emotions are important? आपका प्रश्न है कि क्या जो विचार धरना है उसको क्या रोकना है क्या? क्योंकि कई ऐसे हमारे व्यवसाय हैं, काम हैं, प्रोफेशंस हैं, जैसे आर्ट्स है जिसमें कि बहुत अनुभव करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है इमोशंस को, फीलिंग्स और इमोशंस को। तो उस समय उस प्रोफेशंस में किस तरह से हम सती संपजन्य को रख सकते हैं? Well, mindfulness and awareness, sati sampajanya. You can observe thinking. When you're thinking, there's a knower, there's knowing, isn't it? So it's not a matter of stopping thinking. It's not a matter of not thinking, but of letting go of thinking. Then, in letting go of thinking, there's still conscious awareness. So thinking is it's part of our
the way we are as individuals, as human beings. We're thinking beings. But we tend to attach to thinking and identify with thinking. We identify with sankharas. We identify with our feelings, our memories. These are all identified through, through like my thoughts, my moods, my body. These possessive pronouns create the sense of a separate person, which is limited by the physical body that we have. But sati sampajanya is not about thinking, but the knower of thinking, seeing thinking as sankhara rather than attaching to it or trying to get rid of it. When we try to stop thinking, when we try to use willful effort to stop thinking, you can't really do that. You can stop the thinking process for a moment, but then it rebounds back because it's still based on ignorance, avijja, ignorance of Dhamma, where sati sampajanya is liberating. It's allowing thinking to be, but it also not attachment to thought. बंदे जी कह रहे हैं कि हमको विचारों को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विचारों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उसको कम करने की बात है. हम में ये क्षमता है कि जो हम सोच रहे हैं हम उसको भी ऑब्जेक्टिवली जान सकते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार आ रहे हैं. तो विचार करना हमारे मनुष्यों का नैसर्गिक स्वभाव है. परेशानी विचार से नहीं है, लेकिन उससे आइडेंटिफाई करने से हम उसको अपना विचार मानते हैं. मेरा विचार है, मेरी फीलिंग है, मेरा इमोशन है, और वो उस कारण से एक अलग व्यक्ति का उदयीकरण होता है और हम अपने आप को एक अलग प्राणी समझने लगते हैं. जो सती संपजन्य है वो उसका तात्पर्य है कि जानना, केवल शुद्ध जानना, विचारों को रोकना नहीं है. क्योंकि विचारों को अगर हम ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बाद में दोबारा रिबाउंड करेंगे, क्योंकि उसको रोकने की प्रक्रिया अविद्या के कारण हो रही है, और अविद्या के कारण होगा तो वो हमको परेशान ही करेगा. I have a question. With due respects, I have a question regarding our relationship with desire. From a psychodynamic perspective, we have a conscious and an unconscious, and an unconscious is an amalgamation of your thoughts and your history and your relationships. So, just as you may have a desire to help us become more aware, and we have a desire to be more calm and observe our thoughts, is desire necessarily an unhelpful thing, or what is our relationship with desire? आपका प्रश्न है कि जो डिज़ायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो क्या, उनका साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए? क्योंकि कुछ कॉन्शियस होती हैं, कुछ अनकॉन्शियस होती हैं, कुछ प्रकट होती हैं, कुछ दबी हुई रहती हैं. तो जैसे आप में भी एक डिज़ायर है कि आप हमारी धर्म समझने में हम सहायता करना चाहते हैं, और हम में भी डिज़ायर है कि हम धर्म समझना चाहते हैं. तो इसमें किस तरह का रिलेशनशिप हम अपनी डिज़ायर के साथ रखें? कैसा संबंध हम अपनी डिज़ायर के साथ रखें, अपनी इच्छाओं के प्रति रखें? Well, desire, this is the desire realm. The body is desire, it's the senses, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, the whole world that we're experiencing through this form of the human body. And the human body itself is about desire.
Dhanha is the Pali word. But so it's getting to no desire, like Sati Sampajanya allows us to observe desire. Because Sati Sampajanya is not a desire, it's not created out of ignorance. It's not, it's here and now, and it's Dhamma, here and now, and knowing the way it is. So like the second noble truth, the origin of suffering, the second noble truth, then they list the desires, Kama Dhanha, Bhava Dhanha, Vipava Dhanha, and we're not trying to get rid of desire, but to know desire. So they list these three times, Kama Dhanha, which is the desire for sense pleasures, Bhava Dhanha, with desire for becoming, wanting to become something, like wanting to become enlightened is a form of Bhava Dhanha. It's a desire to attain something that you feel you don't have now. And that's Bhava Dhanha, desire for becoming. And Vipava Dhanha is desire to get rid of things. You want to get rid of anger, get rid of fear, get rid of bad thoughts, is Vipava Dhanha. But the ability to observe Dhanha, in the Second Noble Truth, it's an examination of Dhanha. Desire is like this. That which knows desire is not desire. Desire comes and goes. It's not ultimate reality. And so, that's knowing, this Bhutto style of practice is observing Dhanha in its three aspects, Kama Dhanha, desire for sense pleasures. Just you see something beautiful and you want it, because that's the nature of the sense world. Beauty is attractive. Its very nature is to attract, through sight or sound, smell, taste, touch. And then ugliness tends to repel. So when there's something ugly and unpleasant, we want to get rid of it. So, but this knowing of desire, knowing of attraction and repulsion, is neither attraction nor repulsion, is Sati Sampajanya. जो हमारी तृष्णाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमको जिस रेल में हम रह रहे हैं मानव इस जीवन में, 6 इंद्रियां हमारी, और वो हमेशा बाहर के विषयों से संपर्क में रहती हैं, तो ये इस रेल्म को ही डिज़ायर रेल्म कहा जाता है। और जो डिज़ायर है, जिसको पाली में तन्हा कहते हैं, वो उसको सप्रेस करने की बात नहीं कही जाती। कहा जाता है कि वी शुड नो द डिज़ायर, हम उसको जान सकते हैं। सती संपजन्य जो है वो अविद्या से नहीं पैदा हुआ, जिस तरह से कि जो भी तन्हा है या जो भी डिज़ायर्स हैं वो अविद्या से उत्पन्न हुई हैं। हम उनको जान सकते हैं और उनसे दूर भागते नहीं हैं, और हम समझ सकते हैं कि जो तन्हा है वो दुख का कारण है, जो दूसरा आर्य सत्य है, समुदय आर्य सत्य। और हम जान भी सकते हैं कि किस तरह की तृष्णा है, काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, हमारे इंद्रिय सुख की तृष्णा है। इंद्रियों से जो हमारे संपर्क बाहर वस्तुओं से होते हैं, उसमें कई चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं, चाहे वो देखने की हो, चाहे सुनने की हो या सूंघने की हो। कई चीज़ें बहुत अप्रिय लगती हैं, तो उसको काम तन्हा कहा। और भव तन्हा मतलब हम कुछ चाहते हैं बनना, अपने आप एनलाइटन बनना। मैं चाहता हूँ कि मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं अरहंत हो जाऊँ, तो वो भी एक तरह की वांटिंग है, भव तन्हा है। और विभव तन्हा है कि हम किसी चीज़ से
छुटकारा पाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, हमारे में गुस्सा है, भय है, बुरे विचार हैं, बुरे संस्कार, हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये छूट जाएं, तो वो भी विभव तन्हा है। और हम में जो एक क्षमता है जानने की, सती संपजन्य, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सी तृष्णा है और उसको एग्जामिनेशन करेंगे। और जो हम जानता है कि क्या तृष्णा है, वो जानने की क्षमता तृष्णा नहीं है, क्यों वो तृष्णा जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। क्षमता जो है हमारी बुद्धों की जो क्षमता है, जो जानने की क्षमता है, उसके माध्यम से ही हम परमार्थ सत्य तक, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। So it's like seeing desire as knowing desire as desire. This knowing is not a desire. So it's the escape hatch we have from the realm of desire, which is the physical body and the senses that we experience is all about desire, attraction, repulsion. But mindfulness takes us to, is not about attraction and repulsion. It is peace. It leads us. It's the ultimate nature through sati sampajanya is peace. Where desire is not peaceful. When you desire peace, that's not a peaceful state. But letting go, knowing desire, and non-attachment to desire, when you know what desire is, the insight is to let go of it, relinquish desire. It's not like annihilation, it's not about getting rid of desire, but no longer blindly attaching to desires. Then you experience peace. तृष्णा को, इच्छाओं को जानना वो तृष्णा नहीं है, वो हमारे में क्षमता है। और वो क्योंकि तृष्णा नहीं है तो वो ही एक हमारे को इस संसार चक्र से मुक्ति का एक द्वार बनता है। सती जो है वो शांति देती है, डिज़ायर हमको शांति नहीं देती, तृष्णा से शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन रहता है। तो जब हम किसी चीज़ को जानते हैं कि वो कैसी है, तो उसका मतलब यह है कि हम उसके प्रति अटैच नहीं हो रहे हैं, वी लेट गो ऑफ द डिज़ायर। तो उससे प्रति अटैचमेंट नहीं होता, उससे प्रति चिपकाव नहीं है, तो वही एक शांति का मार्ग है, वही हमको परमार्थ सत्य की ओर ले जा सकता है। Luang Por, can I ask a small question? It's here, over here. Luang Por, I address this question in Hindi because this question would pertain to a lot of my brothers and sisters who are sitting here. हम भगवान बुद्ध के साधना मार्ग में जब से लगे हैं, गोयनका जी का सिखाया हुआ मार्ग था। इसमें 3.5 दिन की आनापान सिखाई जाती थी और हम संवेदनाओं के ऊपर समता भाव रखने सिखाया जाता था। जब हम 1 घंटे की साधना भी करते थे तो उसमें पहले सांस के ऊपर ध्यान करते थे और फिर संवेदनाओं के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस कर्म स्थान को ज़रा और आपसे मार्गदर्शन मिल जाए कि इससे आगे कैसे उठा जाए। जैसे आप चित्तानुपश्ना और धम्मानुपश्ना के ऊपर बहुत महत्व देते हैं, तो हमारे को ये मार्गदर्शन आप देंगे तो इससे हम सबका बहुत लाभ हो जाएगा। Luang Por, I am asking this question in Hindi because many of my fellow meditators of the Goenkaji's tradition will be greatly benefited by it. We have been trained to practice in a systematic manner, and 3.5 days we practice Anapanasati, and then we practice the observation of bodily sensations, which is termed as Vipassana in that tradition. So he wants to know that how do we really move ahead from there, and how does one incorporate Chitta Anupassana and Dhamma Anupassana in the whole process of
practice of meditation? Well, from there you reflect on the Four Noble Truths, which is about mindfulness, like the Buddhist teaching. The thing that really makes Buddhism unique is the first sermon, the Dhammārāma Sutta, and that is to be reflected upon suffering, the causes of suffering, the cessation of suffering, the path of non-suffering. So this when you learn techniques, meditation techniques, then we tend to think that is meditation, a technique that we've been given by a teacher. And so that is, it leads towards, it's pointing in the direction of peace, calm, samatha kind of meditations lead to tranquility. But like the vipassana is about investigating, reflecting. And so reflecting isn't about thinking or analyzing, or it's not about tranquility, but about the way things are. जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का जो यूनिक पॉइंट है, जो उनकी वो है सती संपजन्य, और वो 4 आर्य सत्यों से ही प्रकट होता है। दो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान ने दिया कि दुख आर्य सत्य, उस समुदय, निरोध और निरोधगामिनी प्रतिपदा, वो सब जो है रिफ्लेक्शन की ओर इंगित करते हैं। जब हम मेडिटेशन कोई टेक्निक समझते हैं तो उस टेक्निक को ही हम समझते हैं कि वही मेडिटेशन है। वो हमको शांति की ओर इंगित करती है, हमारा मार्ग, और हमको शांति प्रदान करती है। लेकिन विपश्यना जो है उसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों को इन्वेस्टिगेट करें। जैसे आर्य सत्य में कहा जाता है कि हम उसको समझें, उनको रिफ्लेक्ट करें उनके ऊपर। ये सोचने की बात नहीं है, ये अनुभव के आधार पर, जो भी अनुभव हो रहा है उसके आधार पर 4 आर्य सत्यों के मार्गदर्शन में उसको जानने की प्रक्रिया है। So this is like in Luang Por Sumedho's teaching was very much reflecting on these Four Noble Truths in daily life, where we, just in the monastic lifestyle that we lived, was to reflect on it and observe, your own kind of emotional reactions, moods, arising, ceasing, the way it is, and then you have insight. Using these Four Noble Truths, there's suffering. Suffering should be understood, and then so that's to understand suffering. You're not trying to get rid of it. That's what we try to do anyway. We trying to find happiness and get rid of suffering. But understanding suffering is we're reflecting on suffering, on our own feeling of worry, anxiety, self-consciousness, the sense of the dukkha that we're experiencing in the present. We're allowing it to be what it is rather than trying to get rid of it. So it's not about getting rid of suffering, but understanding. That's a shift in direction, because human beings tend to always be looking for happiness or peace or safety or stability, so suffering is something nobody wants. None of us want suffering, because we want to get rid of suffering and find happiness. Where the first noble truth is there is suffering, should be understood. So rather than just trying to
get rid of suffering, we observe it, we understand it. There is suffering. Suffering has been understood. There's three aspects to each noble truth. There's three aspects to the Four Noble Truths. Three aspects to the First Noble Truth. There is suffering. It should be understood, and then the realization, the reflective insight. It has been understood. So that's an insight. Suffering has been understood, and that doesn't mean, you define. It's not about thinking or analyzing. Why do I suffer? Or trying to think about suffering, but observing the reality of our own sense of self, of separation, of worry, anxiety, stress. Modern life, it presents so much stress and pressure, and this is, so we feel it. We tend to just, be caught in reactions to it, rather than understanding it. It's like this. Stress or worry, anxieties like this. So you see the difference between trying to get rid of it and understanding it, and not through analysis, but through awareness. लुंग पोर चा ने जो हमको सिखाया था कि इन चार आर्य सत्यों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए डेली लाइफ में. हमारी डेली लाइफ में जो भी दुख का अनुभव होता रहता है, उसको हम ठीक से अनुभव करें. चार आर्य सत्यों में हमको जो प्रथम आर्य सत्य है, दुख आर्य सत्य, उसके जो तीन परिवर्तन बताए, तीन आयाम बताए जाते हैं कि दुख है, उसको जानना है और उसको जान लिया है. तो भगवान हमको ये नहीं कहते कि उस दुख है तो उसको हटाने का प्रयास करें, उसको जानने का प्रयास करना है. तो और उसको जानने का मतलब ये कि हम सचमुच में अनुभव के आधार पर समझ रहे हैं कि दुख क्या है, और उस प्रोसेस में ही हमको एक इंसाइट डेवलप होती है, एक अंतर्दृष्टि डेवलप होती है दुख के कारणों के बारे में, दुख की बातों में. तो हमको कोई विचार करके एनालाइज नहीं करना है, दुख का जो अनुभव हो रहा है उसको समझना है. तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक यूनिक एस्पेक्ट है. सामान्यतः हम जब भी दुख का अनुभव करते हैं तो हम उसको दूर भगाना चाहते हैं, एक सेफ्टी चाहते हैं, एक सुरक्षा चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं. लेकिन उनका जो मार्ग है यही उनकी यूनिकनेस है कि वो कहते हैं कि दुख को समझना चाहिए, सफरिंग शुड बी अंडरस्टूड. तो वो जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो जो हमारे दैनिक जीवन के स्ट्रेस हैं, परेशानियां हैं, वो हमारे लिए एक प्रथम आर्य सत्य के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का साधन बन सकते हैं. So like the second noble truth, the causes or the origin of suffering. Suffering is not ultimate reality. It's a noble truth. So why did the Buddha take what nobody wants and make it into a noble truth? I used to ask myself this in the early years. Why would the Buddha take something like dukkha or suffering as this way of teaching when nobody wants it? We want love, we want stability, we want happiness, something wonderful. We want bliss, we want peace. But the First Noble Truth, is after his enlightenment. This is the first sermon after enlightenment. To convey his insight to the Panchavaki, the 5 disciples. He gave this first sermon, the Four Noble Truths. And the second Noble Truth is about letting go of desire. So it's like investigating. Yoniso manasikara, we chant that, it means to get to the root cause of suffering, to see an ignorance, to investigate not through analysis but through observing in the present moment.
दूसरा आर्य सत्य जो भगवान ने बताया वो कि दुख का जो कारण है उसको समझने का, तो जो सफरिंग है, जो दुख है, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। मैं जब शुरू में साधना में आया था तो मुझे यही लगता था कि भगवान बुद्ध ने ये दुख जैसा शब्द एक सब्जेक्ट क्यों लिया टीचिंग देने के लिए, क्योंकि हम सब तो दुख से छुटकारा चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं ब्लिस, पीस, शांति हो, सुख हो। तो उसका क्या कारण था, मैं ये सोचा करता था। तो बात समझ में जो पहला प्रवचन भगवान ने दिया अपने 5 डिसाइपल्स को, 5 भिक्षुओं को, तो उनमें यही समझाया कि जो डिज़ायर है, जो तन्हा है, दुख का कारण है, उसको, उस प्रति जो हमारे यहाँ चिपकाव है उसको छोड़ना है। वी हैव टू लेट गो ऑफ डिज़ायर्स। और वो संभव होगा जब हम उसको पहले समझेंगे और फिर योनिसो मनसिकार से उसके रूट काज की ओर, जो जिस कहाँ से उसका उद्भव होता है उसको समझेंगे, सफरिंग का कहाँ से उद्भव होता है उसको समझेंगे। तो ये दूसरे आर्य सत्य का कि भावना करेंगे, ऐसा भगवान ने हमको सिखाया है। So I think it's time for Thank you. offering the meal. Yeah. Thank you. The food, the alms food that you've prepared and offered has been received, so we give a blessing. Yathavari vaha pura paripurenti sakarang evameva itotinang vedanang ubakapati ititang baditang dumhang kipameva samitatu sape burentu sangapa danto banaraso yatha manicho diraso yatha Samvaroko vinasatu madhe bhavadvandarayo sukhi dikayuko bhava avivadanasila nitya tapachayino jadharo dhammavadandi ayuvanno sukhang varang akaduwe basananang akang damang vichanadang akedame basanana dakinaye anudare akedame basanana virakubasame sukhe ake sanghe basanana punyakede anudare akasaming dhanang tatadang akang punyam patati akang ayujavanno jayaso kiti kang palang akasadhadametavi akatama mahino deva buddho manusowa kabato bhamotaditi bhavantu sabba mangalang Rakhantu sabba devata sambha buddhanubhavena sadhasoti bhavantu te bhavantu sabba mangala rakhantu sabba devata sambha dhammanubhavena sadhasoti bhavantu te bhavantu sabba mangala Kantu sabba devata sambha sankhanupa ina sadhasoti bhavantu te. So traditionally lay people will now chant the closing homage. Please turn to page 26. So I will say the words, the brackets, and you can all follow with the other words, and we'll just do the Pali version. Araham
Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangam Namami. And we can now together pay respects 3 times.